बोल दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। जय गुरुदेव, जय जय श्री राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सो लास्ट क्लास हमने बोलने की प्रयास किया गीता के विषय में, जो हमने बोला था कि कृष्णा इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये इस विषय में बोलना चाहती हूँ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ दिस यूनिवर्स। सो सोल, अबाउट द सोल कंसेप्ट। ओके, सो हम बोलना स्टार्ट करें। This is also from chapter 15. Sariram yada vapnoti yacchaputa kramatishvara grihitayatani samyati वायुर्गंधानि वाशयात। ये हम लोगों को पता चलता है कि as the air carries fragrance, meaning of this slokam is as the air carries fragrance from one part of his one part of body, one place to another. In the same way, the soul carries the concept, the experiences, the knowledge, the sanskar from one body to another. As the body gets transferred, means the bodies are not permanent. So when the soul changes its body, but the sanskara remains the same. So with this slokam, another slok I connected is, this is a slokam of chapter 6, which Arjuna said to Sri Krishna. Chanchalam hi mana Krishna pramatha valavadriram tasyaham nigraham manne vayur iva sudushkaram. In this slokam, Arjuna is saying to Krishna that, O Krishna, our mind is so obstinate, so stubborn, so restless, we can't control our mind. To achieve your bhakti, we should first control our mind, but it's not possible for us. So in this sector I want to add a small thing. It's like the thing that this chanchal hi mana Krishna, chanchalata which is present in us is not present in a true devotee. This is not actually. We should remember it. We should always remember it. ये जो चंचलता है, ये हम मुझ जैसी मतलब मनुष्य को होता है, लेकिन जो डिवोटी है, डिवोटी बाय संस्कार, मीन्स जो डिवोटी होते आ रहे हैं, हमारे गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद त्रिदंडी श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, सरस्वती महाराज, जो परम गुरुदेव, परमिष्ट गुरुदेव थे, परम गुरुदेव, परमिष्ट गुरुदेव, इन लोगों की मतलब they means they have shared this knowledge for us, because so that we can wake, means हम लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोगों को अर्जुन जी के द्वारा कृष्ण ने ये क्वेश्चन आंसर हम जैसे जीवात्माओं के लिए है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमथि बलवद्दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम. The mind is super restless. It's not possible for us to control our mind. For that sector, please can you tell Krishna is no one else. He is the super attraction. He have the super attracting power. He attracts the mind of powerful yogis, powerful rishis, the most powerful all Paramahansas. So here it is said that
the one who attracts everybody's mind, every yogi's mind. So can't you control our mind? Yes, obviously. So Krishna is saying, Sri Bhagavan Vachah asansyam mahabaho manodurnigraham chalam abhyasena tu kaunteya vairagyena cha griyate. So in this sector, Lord Krishna is saying that by abhyas by practice, we can achieve vairagya. Okay, and that in this way we can control our restless mind. So for in this sector I want to say, so chanchalam hi mana Krishna pramathi balabhadriram tasyaham nigraham mannoy vayuriva sudishkaram. This is completed, and now we are going, we said that Bhagavan said that Sri Bhagavan Vachah asansam mahabaho manodurnigraham chalam abhyasena tu kaunteya vairagyena cha griyate. By abhyas one can attain vairagya. What abhyas? What practice? भक्ति प्रैक्टिस. भक्ति प्रैक्टिस करने से हम लोगों को क्या अटेन होगा? वैराग्य. यस, भक्ति प्रैक्टिस हम लोगों को कैसा करना है होगा? आप बोलोगे वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो हम टेम्पल में चले जाएं परमानेंटली. रोज़ टेम्पल नहीं जाना होता है, तो कैसे करें? यस, वी शुड इन ऑल्दो we are in this world, we have to do all material works, all everything, it's very important for us. So हम अपने काम करेंगे, हम अपने परिवार की देखभाल करेंगे, हम अपने काम करेंगे, हम अपने परिवार की देखभाल करेंगे, हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई करेंगे, जो मदर पेरेंट्स हैं उनकी बच्चों को देखभाल करेंगे. ये सब के साथ बराबरी, एवरीथिंग विल डू, नो प्रॉब्लम. बट इंडल्ज योर माइंड, ये तो अपने पास है ना, ये किसी दूसरे चीज़ में मत दो. इंडल्ज योर माइंड इन द सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा. हम लोगों को बस स्मरणम बाय थिंकिंग, बाय कीर्तनम, बाय टॉकिंग, बाय श्रवणम, बाय हियरिंग, वी शुड इंडल्ज आवर माइंड, बॉडी एंड सोल in where? In the lotus feet of Krishna. Only by this, when as we get attached to Krishna, attachment to Krishna is known as parisanubhava. Once a soul get attached to the super soul, okay, super spirit Krishna, that time it becomes completely free from maya. It attains vairagya, and in this way one attains bhakti. Okay, this is the beautiful concept for which we should practice bhakti. We should chant Harinam, we should do regular practice of our bhakti, and this is the reason. So Hari Bol, Hari Krishna, Dandavat Pranam in all everybody's lotus feet. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev.